Right. So we're dealing with production theory. In comparison to our previous chapter, जो utility theory or indifference curve analysis था, that was to do with the demand curve, right? The derivation of the demand curve. Now, this next chapter is about the derivation of the supply curve, basically. Okay, and there's more to it, but mainly from the producer's point of view. अगर आप कहते हैं producer's theory बताएं, तो this is the chapter for producer's theory. और पिछला chapter जो था marginal utility theory and indifference curve analysis, वो आपका demand theory था या consumer theory था, right? Talking about consumer behavior. This is talking about producer's behavior. Now, obviously, producer का काम क्या है? They take the four factors of production, three factors of production: land, labor, capital, and the entrepreneur himself or the enterprise combines those factors of production, and you want to produce X number of goods and services in the best possible way. ठीक है? So the first bullet point that we have in this chapter, what you should know is explain that labor is the usual variable factor of production in the short run, while all other factors of production are fixed. What should we know about this element? Number one, we're talking short run. वैसे तो इधर mentioned है. How do I know it's short run? In MCQs or case study, how do I figure it out? You have a fixed factor. And you have one variable factor जो वो कह रहे हैं is the labor in this case. ठीक है, labor is the variable factor. So through our examples, what we've done already is एक टेबल बनता है जिसमें आप quantity of labor को देखते हो कि if I have zero labor, what will be the total product of zero labor? Obviously, nothing. But if I have one labor and X number of machines, whatever, how much output am I getting? I said, okay, with, let me write, with the amount of capital, let's say I have three tractors, okay? If I have three tractors and zero labor, production is going to be nothing. If I have three tractors and one labor, clearly the production starts to go up. I have three capital, and if I have two labor, my total production, let's say, is 14. Um, total product has increased, right? उसके बाद क्या होना चाहिए? वैसे तो 14 is not a nice number. I should go for something more on the extreme side. Let me go for like 24 or something. Because just imagine, if I have two labor and three tractors, I should get a lot better return comparatively. Let's suppose if I have three capital and three labor, I'm saying my output is somewhat like uh, 40. Let me go a bit extreme side. Output is 40. It's increasing because more labor with the given capital. Output is increasing. Same three labor. Now I have four labor. Now they'll have to share the capital resources. So let me say now my output is 52, and then I can keep on going like this. Let's say 60-ish or something. What I'm trying to show here is uh, as I'm increasing the amount of labor, okay, what I notice is that the change in my total product, इसको हम marginal product कह सकते हैं, the marginal product for labor. How much was the first labor producing? 10. When I hire the second labor, the change is 14. Two labor collectively are making much more, right? The second labor के आने की वजह से the system got improved and my productivity has increased even further. When I hire the third labor, what has happened? It has gone up even more. It has gone up to 16. When I hire the four labor, up constraint आना शुरू हो गया है. So now the number starts to go down again. Fifth labor, it goes even further down, and it's going to keep on happening. Why is this happening? Because in the short run,
when you add the variable factor to the fixed factor, the fixed factor constraint causes the marginal productivity to eventually fall. And the first point where it falls is where we say that after the third labor, the law of diminishing marginal return will set in. On the fourth labor, it has already set it in because MP has started to go down. But on the third labor, that would be sort of like the peak. If I was to, like, for example, do the diagram at this particular point, what will I see? Total और marginal के अंदर अगर मैं diagram देखूं, तो this is what's going to happen, right? Let's take it up here. This is what I would see. MP is increasing at first, as you can notice, 10, 14, 16. It's going up, right? It's increasing as I am increasing the amount of labor, the marginal productivity of labor is going up. इस particular idea को हम बोलते हैं increasing return. We are experiencing increasing returns in the short run that on the fixed factor, as I'm adding variable factors, my per banda jo add on ho raha hai, uski productivity is getting better because the system is getting better. And I gave you an example in my lecture about how one single farmland and one tractor, ek banda is not going to be so productive, but once there are two people, they can handle and manage the whole thing much more effectively. जब ये सिचुएशन होती है तो नीचे जो टोटल प्रोडक्ट है दैट वुड बी शोइंग सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंक्रीजिंग वाला पार्ट यू नोटिस हियर and it's going up like this is going to be increasing, all right. फिर उसके बाद what we observe is that you sort of like strike on something called the law of diminishing marginal return, which is happening on the third labor, right? And after that, what we notice is कि जी आपका marginal product गिरना शुरू हो जाता है until it hits the 0 point. मेरे इस example में अभी तक 0 पे पहुंचा नहीं है. It's probably far off a little. But what I observe as a result of what's happening here is this is what starts to happen, right? When MP is falling, but it's positive, total product is increasing, but at a decreasing rate. इनका जो change होता है वो MPs होते हैं, right? And after that, once you go into the negative domain, which is when MP starts to go in the negative side, the total product starts to fall. Also, this is how the total product and this sort of works. Marginal का जो relationship है. Probably one of the elements in this topic will be dealing with that. उसके बाद आप averages निकाल लेते हो. Average क्या है? Pure math किस तरह से? सिंपल है. एवरेज प्रोडक्ट को लेबर निकालना है तो यू टेक द टोटल प्रोडक्ट, यू डिवाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ लेबर. फॉर एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग. उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 1 क्वांटिटी ऑफ लेबर ये है ना, वी नॉट डूइंग विद दैट. सो फर्स्ट में आपको 10 मिलता है, फिर 24 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू अबाउट 12. इंक्रीज हो रहा है एवरेज. 40 divided by 3 gives you, how much would that be? Let me do it through calculator. 40 divided by 3 to be precise, still going up. The average is still on the rising side, still the third labor. And then 52 divided by 4, थोड़ी सी मेरी line खराब हो गई है. 50 divided by 4 is 13. Now it starts to fall after the fourth labor. It starts to go down. And 60 divided by 5 is 12. It goes even further down. So when I'm going to be making this, this is what's going to happen. It's going to go up, hit the peak, and it's going to start falling down. This is how your average product for labor is going to look like. A few things. सबसे पहले law of diminishing return kicks in. उसके बाद average product starts to fall down. और उसके बाद total product falls down. So if we have to rank what falls first, the marginal product falls
first, average falls second, and total product falls third. So this is how it's sort of like ये एक relationship है. I don't know essays में जरूरत पड़ सकती है, so you should know this stuff. MCQ के लिए तो definitely you should know this stuff. You're gonna get a mark and you're gonna save a lot of time using this. But that also brings us to one of the relationships that we talk all the time, which is about the marginal product's relationship with average product, right? तो सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा अप्लाई भी होगा अभी कि अगर मार्जिनल इज ग्रेटर देन द एवरेज, एवरेज इज गोना गो अप. व्हेन मार्जिनल गोज डाउन and the average is above the marginal, average is going to fall down, and this is the point where marginal and average meets. Okay, so you know you should have like a snapshot in your head regarding this. So point number one, explain that labor is usually variable factor of production in the short run, while all other factors of production are fixed. ठीक बात है, because देखो labor की hiring और firing a lot more easier है as compared to capital or land. You know, it's not something that you can do on a very short notice, right? Highly improbable. Okay, जी, moving on. Understand the difference between total, marginal, and average. I think I've clarified that using the formulas and how they work. In fact, you should even know their relationship. Total का marginal से relationship है, average के साथ कोई खास relation है नहीं. I don't think you can make any relation. So you have relations between total and marginal, and you also have relations between marginal and average. This is how it goes. I've just dealt with that with you guys. Um, Calculate total product, marginal product, and average. We've done it through the tables here. Describe the concept of law of diminishing returns. This point right here, the peaking point, after which the fixed factor constraint kicks in and her extra bande ki productivity is less than the previous. If you notice, हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था चैप्टर 1 यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ वी आर सेइंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. दोनों by definition are talking about how when you consume one extra unit, your utility falls compared to the previous one. यहाँ पे when you hire one extra variable factor, labor, the productivity of that extra labor falls as compared to the previous labor that you hired. थोड़ा सा बहुत minor सा फर्क है, contextually different है, लेकिन the math is pretty much the same, right? And this math and logic will come up over and over again. But the point is, law of diminishing returns is this. अच्छा, ये जब ये गिरना शुरू हो गया, ये तो मैंने बताया, जब MP is increasing, we call it increasing returns. But when MP is decreasing, we call it decreasing returns. Okay, this is what you're experiencing, and then you have that law of diminishing marginal returns. कोई भी ये वाला चैप्टर कर रहे हो शॉर्ट रन का, ये इसके बगैर आप कर ही नहीं सकते. देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बगैर आप एमयू की बात ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज डिमांड कर्व रिलाइज ऑन दैट. तो काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे इन अ वे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के ऊपर सप्लाई कर्व की एक रिलायंस है, विच वी विल डील विद इन जस्ट अ बिट. Now, since we're talking about short run, so short run ke andar, they're saying explain the importance of the short run cost function and the two types of short run cost, the fixed cost, the variable cost, and the total cost, obviously, right? इसके भी कई सारे diagrams बनते हैं. In this simplistic way, we can have is right. So sort of like now I'm talking about output over here, okay? ऊपर वाले में क्वांटिटी ऑफ लेबर था जब मैं डिमिनिशिंग शॉर्ट रन की बात कर रहा था, एमपी टीपी और ये.
अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है विद डिफरेंट कॉस्ट्स ओवर हियर। फिक्स कॉस्ट प्लीज सही से डिफाइन करना, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी messing around with the definition. Certain definitions you should be very good with. In fact, what I'll do is somebody could, remind me. I'll send you the glossary list. इसमें सारे terms की definitions हैं. I think I have shared the formula one. I'll share the glossary also, जिसमें basic definitions वगैरह तो मिल ही जाएंगी तुमको. Let me see if उसमें इतना basic है कि fixed cost की बात की हुई हो. Fixed cost, yeah, fixed cost है. Example नहीं दिया हुआ but fixed cost है. We have the total fixed cost and then we make total variable cost, ठीक है. And then we have इसी के अंदर ही fixed cost ऐड कर लो तो with the parallel gap, we get the total cost. This is how this sort of works. ठीक है जी. तो ये आपकी हो जाती हैं total fixed cost, variable cost and total cost is the combination of the two. The gap between them is basically should be of the fixed cost. और चलो मैंने इतनी accuracy से नहीं बनाया. Let me do the accuracy a little. किस तरह से करेंगे accuracy? जो vertical distance है fixed cost का, I will add that to my variable cost basically. Right? एक इधर भी करके देख लेते हैं, इधर भी ले आते हैं और एक इधर भी. क्योंकि स्ट्रेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. But this is how it's gonna be. Um, so this is how my sorry, something like this and then like that, right? तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाता है. सिंपल हो गया. ये जो ऑरेंज लाइन है, द ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट्स the orange line represents the fixed cost. Total cost minus variable cost gives you the fixed cost basically. ठीक हो गया. तो ये तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई दो एग्जांपल्स याद करो. बट डेफिनेशन भी होनी चाहिए दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट. It does not change with the level of output. Whether you make zero output, you have to pay the fixed cost, and whether you're producing 100 units, you have to pay the fixed cost, like rent. It can be salaries, not wages, but salaries. um, right? Or maybe even interest payments if you've taken on a loan. Variable cost changes with the level of output. It could be raw material, it can be packaging, it can be wages also acceptable है. And then total cost is obviously the combination of the two. आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद what are the things? So you should know your fixed cost, variable cost and all of that. फिर उसके बाद, let me take this. Calculate the total cost. That's so simple. Fixed cost plus variable cost. Average fixed cost. How would that look? Average, sorry, fixed cost, average variable cost, and average cost, and along with the marginal cost. ठीक हो गया. इसी ग्राफ को देखते हुए I can come up with my averages, but formula बड़ा ही सिंपल सा है. एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से. एवरेज कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो. यू नो, AFC प्लस ABC, ऐसे भी चल सकता है. राइट, बट द थिंग इज, व्हाट अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट? Marginal cost is the change in total cost when there is a change in quantity. ओके जी, कैसे बनाए? ठीक है. जब भी इस किस्म का शेप होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट का ऐसा शेप होगा, तो तुम्हारे एवरेजेस के जो इनके कर्व्स बनेंगे वो ऑटोमेटिकली यू शेप होंगे. दैट्स अ गिवन. ओके. अगर ये लाइन स्ट्रेट ऊपर जा रही होती
यू नो, तो फिर it would have been different. फिर एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही होती, if that was the case. I think so, गिर रही होती in a curvy fashion, I believe, जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता है. Oh no, it would be a straight line. My bad. अगर देखो, now this is where the math comes in. अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन होती, इट वुड नॉट हैव बीन अ कर्वी लाइन. ओके, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ग्रेडियंट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्रेडियंट है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है आपकी. एंड रिमेंबर, इस लाइन का ग्रेडियंट और टोटल कॉस्ट फिर ऐसी स्ट्रेट लाइन होती तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट ही होता, बिकॉज दे आर टू पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ तो मार्जिनल कॉस्ट बनता है. टोटल कॉस्ट का भी ग्रेडियंट निकालोगे तो वही मार्जिनल कॉस्ट ही बनता है. तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल फ्लैट लाइन हो जाएगी, बिकॉज कांस्टेंट है ग्रेडियंट, आप कह रहे हो कांस्टेंट है. ठीक हो गया. तो दैट वाज जस्ट अ मैथमेटिकल रूल व्हिच आई डोंट नो, मे बी यू शुड बी अवेयर ऑफ. क्या ख्याल करूं, अब मैं बनाता हूं कि मुझे इसको यू शेप बनाना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को. ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो उसका एक तरीका है. अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम के साथ उसका कोई लिंक दिखाना चाह रहा हूं, तो लेट मी शो यू. जीरो से स्टार्ट करेंगे. ब्लू लाइन जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका मैं टेंजेंट ढूंढने जा रहा हूं. टेंजेंट, टेंजेंट, राइट ओवर हियर आई सी अ टेंजेंट. Right there, I see a tangent. Why is this tangent important? Mathematically, जब मैं ये लाइन जीरो से वेरिएबल कॉस्ट के साथ यहां से लेके जाता हूं, तो दिस वुड बी द पॉइंट वेयर मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमाइजेशन हिट होना चाहिए. So if I'm making my curve of average variable cost, this is the point where I'm going to minimize it, and then I'm going to let it be on its way up. That's how it's going to be. ये एक तरीका है. ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, अब टैंजेंट ढूंढ लो, ये क्रॉस कर रहे हैं ग्रीन लाइन को. टैंजेंट क्या होता है? वेयर अ पॉइंट वेयर इट जस्ट एक सिंगल पॉइंट ऑफ द टच. यहां पर इफ आई एम मेकिंग माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कुछ इस तरीके से आएगा. इट्स गोना बी मिनिमम at this particular point. It's going to be on its way up, and that's how the average cost is going to look like. Two minimum points, one here and one over here. Marginal cost कहाँ होगा? Automatically, and I've done this. तुम Google Drive पे जाके topical lectures देख लो with numbers. I've proved this and we've done that. कि जब आप marginal cost बनाने जाते हैं, तो marginal cost कुछ इस तरह से शुरू होता है. It goes down at first, hits the minimum, and then it starts to go up. Right after that, it starts to go up, touches this minimum point of average variable cost, touches the minimum point of the average cost, and then it's on its way up. ये मार्जिनल कॉस्ट का शेप होता है. खुद ब खुद ही ये नंबर निकलता है. एंड इफ यू नोटिस, ये जो शेप आ रहा है, ये शेप एग्जैक्टली वो जो हम मार्जिनल प्रोडक्ट बना रहे थे ऊपर, इफ यू नोटिस, ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो आया था, इसका बिल्कुल ही एक इनवर्स शेप इज दिस. बिल्कुल उसका इनवर्स शेप है. फर्स्ट यू नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है. आई थिंक, आई बिलीव इसका एक रिलेशनशिप आगे आएगा भी. ओके, सो ऑफ ऑल दिस केस, मेरा एक ग्राफ अभी भी मिसिंग है एवरेज फिक्स कॉस्ट का. उसको क्या होना है? सिंपल है. फिक्स कॉस्ट ऐसी स्ट्रेट लाइन जा रही है. अगर यही मैं जीरो से ओरिजिन से लाइन करूं तो मुझे टैंजेंट कहीं भी नहीं मिलेगा. उसका क्या मतलब है? कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूसली गिरती है. एग्जाम्पल भी हमने समझाया हुआ भी है पहले भी कि किस तरीके से होता है. व्हाट आई नो इज, एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल हटा दो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट बचता है. मीनिंग,
ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, अगर मैं इनको यहाँ नीचे प्लेस कर दूं इफेक्टिवली, मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट की प्लेसिंग आ जाती है। काइंड ऑफ लाइक, इतना भी नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा, इट्स गोना बी लिटिल कर्वेचर लाइक दिस। थोड़ा सा ऑफ आ रहा है बट तो मेरा यहाँ पे इक्वलाइज आ रहा है, इट शुड नॉट बी सो इक्वल, देयर शुड बी अ लिटिल गैप हियर, और काफी सीरियस गैप आना चाहिए वैसे तो, ये थोड़ा सा कम से कम इतना बड़ा गैप होना चाहिए। ओके, बिकॉज जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है ना, बड़ी स्पीड से गिरता है शुरू के अंदर। तो इफ आई वाज टू मेक इट, शुड हैव बीन समथिंग लाइक इस तरह से जा रहा होता, थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड के ऊपर होता। सॉरी, just bring it down, right, time on this, but शुरू में गिरना चाहिए ना, बहुत तेजी से गिरना चाहिए। व्हाई? बिकॉज लुक, अगर लेट्स से फिक्स कॉस्ट है 100 की एंड आई एम मेकिंग 1 यूनिट, तो पूरा एवरेज फिक्स कॉस्ट 100 का पहले यूनिट पे जा रहा है। बट देन इफ आई हैव 2 यूनिट, द सेम 100 गेट्स डिवाइडेड बाय 2 और एकदम से ड्रॉप आ जाता है, 50 पे चला जाता है। फिर लेट्स सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग लेट्स से 4 यूनिट, so it's going to fall down to 25, almost like halving का इफेक्ट आ रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये चलता रहता है, तो इसकी वजह से एवरेज फिक्स कॉस्ट बड़ा स्टीपली ड्रॉप होता है, एंड दैट्स हाउ इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स। MC का कर्व, let me talk about this MC का curve a little more. Just wait 1 second and let me explain it. Sort of like, have to connect it what we've done earlier, जब MP और TP की बात हो रही थी ना, तो उसी के perspective से थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा इसको, marginal cost के curve को। So what we saw was that initially, as you were hiring more labor in the short run, हर एक्स्ट्रा लेबर की जो प्रोडक्टिविटी थी, दैट वाज इंक्रीजिंग एट फर्स्ट, यू हैड एन इंक्रीजिंग रिटर्न का एलिमेंट टेकिंग प्लेस, ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब यहाँ पे मैं ये क्वांटिटी ले रहा हूँ, बाय द वे, सो व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी, व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट एज आई एम हायरिंग मोर लेबर, हर एक्स्ट्रा लेबर जो मैं हायर कर रहा हूँ, उसकी प्रोडक्टिविटी इज हायर देन द प्रीवियस गाय दैट आई हायर्ड। So what that means is, from the cost point of view, that हर एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो मुझे मुझे मार्जिनल कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट इज फॉलिंग, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स वुड मीन that your marginal cost of producing one extra unit should be falling because there's an advantage to adding labor. फिर उसके बाद जब MP गिरना शुरू हो जाता है, तो दैट इज शोइंग दैट अब जो लेबर तुम हायर कर रहे हो, उसको फिक्स कैपिटल के साथ कंस्ट्रेंट आ रहा है, और उसकी प्रोडक्टिविटी हैज स्टार्टेड टू गो डाउन, एंड व्हेन प्रोडक्टिविटी हैज स्टार्टेड टू गो डाउन, दैट मींस द क्वांटिटी, that means the cost of producing extra unit is starting to go up now. It's costing you more because हर extra labor एक certain price ले रहा है, cost कर रहा है आपको, but their productivity is relatively lower than the previous guy. तो हर extra output के ऊपर जो marginal cost आनी चाहिए, that should be rising with it. It's sort of like a mirror reflection. In fact, जब हम इनकी एवरेज की भी बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली थ्रू नंबर्स व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि अगर एवरेज प्रोडक्ट ऐसे जा रहा है, तो बिल्कुल एवरेज कॉस्ट जो आ रही होती है, वो भी उसका मिरर रिफ्लेक्शन पिक कर रही होती है, एवरेज कॉस्ट। दिस सॉर्ट ऑफ लाइक कनेक्टेड, राइट? एंड दिस इज हाउ द रिलेशनशिप वर्क, जो इसका हमने किया था ना, इफ MP इज ग्रेटर देन AP, मीनिंग जब मैं एक एक्स्ट्रा लेबर हायर करता हूँ, उसकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल एवरेज प्रोडक्ट मेरी फैक्ट्री फ्लोर की एवरेज प्रोडक्टिविटी से अच्छी है,
So what's going to happen? It's going to pull the average up, right? It's going to pull the average up if the guy that I've hired is more productive than my average productivity in the business. So the average is going to go up. उसी तरह से अगर उसका दूसरा पर्सपेक्टिव है, अगर हर एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी एवरेज कॉस्ट से कम है हर एक्स्ट्रा यूनिट की, तो ऑटोमेटिकली द एवरेज इज सपोज्ड टू बी फॉलिंग डाउन एंड दैट इज व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस मिनिमम पॉइंट। उसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है तो एवरेज भी पुल अप होना शुरू हो जाती है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज हर एक्स्ट्रा लेबर जो मैं हायर कर रहा हूँ उसकी प्रोडक्टिविटी इज लेस देन द एवरेज। So it's sort of like I'm saying that in my factory, on average, हर बंदा जो है 10 यूनिट बना रहा है. But when I'm hiring the 11th guy or the 12th guy, one extra guy, उसकी productivity is not coming as good as the average. It's lesser. So what's going to happen? The overall business average is going to fall down, and that means the overall business average cost is going to go up. All right. So that's our discussion for this. Understand that the short run average cost curve and the marginal cost curve are U-shaped. I think we just did that कि वो U-shaped क्यों होता है। अच्छा, marginal और average का U-shape है ना, ये देख लो इधर। marginal क्यों U-shape आ रहा है? marginal का U-shape क्यों है? law of diminishing returns. By the way, I should mention over here law of diminishing marginal returns and law of variable proportion दोनों एक ही बात हैं। ये वाला जो पॉइंट है पीक वाला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, which is the same thing as law of variable proportion. So that causes that lower point on the marginal cost and then it starts to go up. Same goes with एवरेज क्यों ऊपर होता है? बिकॉज उसका फिर आप कंडीशन करते हो कि अगर मार्जिनल कम है एवरेज से तो एवरेज गिरेगी, अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट पुल अप होगी, एंड दिस वुड बी द पॉइंट जहां दोनों मीट करते हैं, एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड एवरेज प्रोडक्ट विल बी हायर। तो ये उनका एक रिलेशनशिप है शॉर्ट रन के बारे में। Explain that all factors of production are variable in the long run. In the long run. अच्छा, शॉर्ट रन की एक इक्वेशन भी मैं तुमको दिखा देता हूँ जो एक एमसीक्यू के अंदर आ चुकी है, तो यू माइट वांट टू सी दैट। टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? लेट्स अस्यूम एक्स इज आउटपुट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ, फिक्स कॉस्ट तो मुझे देनी ही देनी है, लेट्स से 500। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? हर क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की 2 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2x। अंडरस्टूड? सो एवरी टाइम x यानी आउटपुट इज गोइंग टू चेंज, दैट्स गोना गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस द 500 और मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। उसी तरह से अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो क्या करूंगा? अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो क्वांटिटी से डिवाइड कर लो, विच इन दिस केस इज x, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय x, इससे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, 2x डिवाइडेड बाय x कर लो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, और टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय x ऑब्वियसली दैट्स गोना गिव यू द एवरेज कॉस्ट। इन दोनों को भी ऐड कर लो तो एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। तो अगर इक्वेशन वाइज यू नीड टू वर्क आउट, दिस इज हाउ यू कैन वर्क आउट। ओके, so explain that all factors of production are variable in the long run. So that means in the long run there is no fixed cost. तो इक्वेशन अगर मैं टोटल कॉस्ट की बनाता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से ही होगी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं। जैसे ही अगर मैं जीरो मार्क कर दूंगा तो वो पूरा लॉन्ग रन के अंदर भी जीरो हो जाएगा। जीरो क्वांटिटी मीन्स जीरो आउटपुट एंड जीरो कॉस्ट इवन। एक आइडिया हम बोलते हैं कि देखो, प्रोडक्शन शॉर्ट रन में होती है, प्लानिंग लॉन्ग रन में होती है। तो
लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व विद द क्वांटिटी, short run average cost curve होते हैं, and if you want to come up with LRAC, there is a way to do it. In the short run, with the given fixed factor, ये आपकी average cost है, ये आपकी marginal cost है, ये short run की situation है। ये एक short run की situation है कि आप optimum level के ऊपर short run में इतनी quantity बना सकते हो at an average cost of this. Then you decide to expand your business. Okay, the moment you have a new factory, that's a new capital. There is a change in the capital. तो फिर आप नई फैक्ट्री को इंक्लूड करके जब अपना नया एवरेज कॉस्ट निकालते हो तो इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। इसका भी एक मार्जिनल कॉस्ट होता है विच गोज लाइक दिस। ये पॉइंट आ जाता है आपके पास। अब क्या हो रहा है? ज्यादा क्वांटिटी एट लेसर एवरेज कॉस्ट कंपेरेटिवली पुराने वाले से। तो फिर आप और फर्दर एक्सपेंशन करते हो एंड यू सी average cost 2 with its marginal cost like this. But what we observe is कि अब एवरेज कॉस्ट ज्यादा क्वांटिटी बना सकते हो बट एवरेज कॉस्ट इज गोइंग अप। इसका फिर आप LRAC बनाते थे, कुछ इस तरह से लेकर आते हो, मिनिमम टच कराते हो, and this becomes your LRAC, which shows a business progression as the time passed, right? And as you added more and more factors of production to expand your business. It's a long run situation because remember, ये फिक्स फैक्टर है इसमें, फिर आपने चेंज किया, अब नया फिक्स फैक्टर्स आ गए, फिर आपने चेंज किया, नए फिक्स फैक्टर्स आ गए। LRAC के एनवेलप में सबको डाल दो तो सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, लेबर भी चेंज हो रहा है, कैपिटल भी चेंज हो रहा है, लैंड भी चेंज हो रहा है। ठीक है? एंड हेंस वी से इन द लॉन्ग रन the average cost has all factors of production variable because आपके शॉर्ट रन कर्व चेंज होते जा रहे हैं। ये जो एवरेज कॉस्ट हैं ये सारे शॉर्ट रन के कॉस्ट हैं। इसमें आपका इंक्रीसिंग रिटर्न, डिक्रीसिंग रिटर्न के एलिमेंट्स हैं, बट इन द लॉन्ग रन you have economies of scale, diseconomies of scale, increasing return to scale, decreasing return to scale। फॉर्मूला वाइज दोनों चीजों का मतलब अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट एट द एंड ऑफ द डे दोनों का सेम है। So that concludes all factors of production are variable. Why? Because short run सारे include हो जाते हैं एक long run को बनाने में। Explain increasing and decreasing return to scale। Simple definition तुमको आनी चाहिए। सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, लेकिन उससे पहले रिटर्न टू स्केल को डिफाइन करना आना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है, आउटपुट, टोटल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। ओके, फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। इसका क्या मतलब हुआ कि हाउ मच आउटपुट यू आर गेटिंग पर लेबर या पर यूनिट ऑफ इनपुट दैट यू आर पुटिंग इन, बेसिकली एवरेज ही है एक तरीके का समझो। लेकिन पर इनपुट के हिसाब से एवरेज है ये। तो इंक्रीजिंग रिटर्न का क्या मतलब है कि मैंने इनपुट को डबल कर दिया, आउटपुट डबल से भी ज्यादा मिल रहा है मुझे। दैट इज एन इंक्रीजिंग रिटर्न, दैट्स फिनोमिनल। बिकॉज व्हाट्स गोना हैपन टू योर एवरेज कॉस्ट इफ दैट्स द केस? मैंने इनपुट्स को डबल किया और आउटपुट डबल से भी ज्यादा हो गया, इसका मतलब यह है कि मेरी एवरेज कॉस्ट गिरनी चाहिए, पर यूनिट मुझे बहुत फायदा होगा। फिर होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इनपुट को मैंने डबल किया, आउटपुट डबल से भी कम आ रहा है। That is showing wastage taking place. That even though I've hired double amount of labor, my returns are actually lesser than double. तो क्या मसला है उसके अंदर? Obviously, there has to be something wrong for this thing to happen, and it actually causes the average cost to go up. इसमें कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, बट कांस्टेंट भी एक चीज है कि इनपुट को डबल किया तो आउटपुट भी डबल हो गया, राइट? दैट्स मिसिंग ओवर हियर। तो
I don't know why that's missing. It's there in my lecture, but at least you can take a look at that. ठीक है? So that is your output over input. What are you getting per unit? Per input, sorry. Explain that in the long run, all inputs are variable. I think we've already done that all factors of production are variable in the long run. उसी तरह से सारे inputs भी variable and that means you can add as many labor and capital and enterprise and whatever into the whole thing. It's pretty much the same idea. I think first one is saying कि land labor capital भी variable है. Second one is this one is saying कि इसके अंदर सारे factors variable हैं और उनकी हर individual factors की भी quantity I don't know change हो सकती है. I don't know, seems redundant. Explain why the long run average cost curve LRAC is a U shape, increasing returns और decreasing returns की वजह से. Okay? और उसके पीछे obviously हमारे certain reasons हैं जो नीचे आएगा. Economies of scale and diseconomies of scale and all of that. So let's see. So LRAC U shape क्यों होता है? Because expansion के बाद average cost आपकी गिरती है at first and then it starts to rise. अच्छा, by the way, अगर मैं अपना long run average cost ऐसे बनाता हूँ, which has lots and lots of short run, देखो सबके साथ अपना marginal cost भी है, by the way. So don't ignore that even the long run has a marginal cost also. Okay, so अगर LRAC ऐसे बना हुआ है, which was supposed to have lots and lots of short-run average cost on it and marginal short-run marginal cost in it, तो LRAC के साथ भी यही है. और वो कंडीशन अभी भी अप्लाई होती है कि LRMC अगर नीचे है एवरेज के तो एवरेज पुल डाउन होगी और LRMC अगर ऊपर है एवरेज से तो एवरेज पुल अप होना शुरू हो जाएगी. जहां पे LRMC और LRAC इक्वल है, दिस वुड बी द पॉइंट. समटाइम्स तुम देखना एमसीक्यूज के अंदर वो LRAC और LRMC को ऐसे फ्लैट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे LRAC इज इक्वल्स टू LRMC. इनफैक्ट हो सकता है कि वो ये लिखे भी ना, लेकिन तुमको समझ होनी चाहिए कि अगर LRAC फ्लैट है तो LRMC भी इक्वल होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है? सो इट हैज अ यू शेप. आगे बढ़ें. Explain the concept of minimum efficient scale. All right, decent concept है minimum efficient scale का. देखो जी, हर बिजनेस का एक कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है. कुछ बहुत ही हैवी इनपुट बिजनेसेस होते हैं जिसमें आपका फिक्स फैक्टर बहुत हैवी होता है. कार मोबाइल इंडस्ट्री लेट्स से. कार मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, या स्टील मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है. एज कम्पेयर टू अ स्मॉलर बिजनेस, कोई प्रिंटिंग प्रेस हो गई, दैट्स मच मोर स्मॉलर. एक छोटी सी जगह में 200 गज की जगह में हो सकता है. फैक्ट्रीज यूजली टेक एकर्स ऑफ स्पेस और उनकी मशीन्स भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं वगैरह वगैरह. तो हम बात ये करते हैं कि ठीक है जी, अभी तो हमने डिसाइड किया कि LRAC हमेशा ऐसे होता है. LRAC इस तरह से होता है. बट द कंपैरिजन इज दैट सम बिजनेसेस का LRAC ऐसे हो सकता है. इसका क्या मतलब है? इफ आई कंपेयर द टू, LRAC is a much larger business as compared to LRAC 1 as a small business. Because देखो कि ये जो है अपना ऑप्टिमम लेवल एक बहुत ही कम. अच्छा, एक्सेस तो मैं बता दूं पहले. यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट डिमांड. यू सॉर्ट ऑफ लाइक मेजरिंग कि तुमको मार्केट का कितनी डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ऑटोमोबाइल सेज कि अगर तुमको मिनिमम एवरेज कॉस्ट अचीव करना है तो यू शुड हैव एटलीस्ट से 30%
और लेट्स से आसान करता हूँ 25%. You need to have at least 25% of the total market. You will be able to achieve the minimum efficient scale. Minimum सबसे कम efficiency का output level scale ना, वो 25% of the market demand अगर तुमने fulfill कर ली, you will be able to minimize your average cost. तो तुम्हारे कॉस्ट स्ट्रक्चर जितनी कितनी फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, मैं कहता हूँ 4 फर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं और चारों फर्म्स मिनिमम एफिशिएंट लेवल अचीव कर लेंगी. लेकिन दूसरे एंड के ऊपर ये जो एल आर ए सी दिखा रहे हैं, ये मिनिमम एफिशिएंट स्केल दिस कुड बी के फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है 10% ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड पे उसका मिनिमम एफिशिएंसी अचीव हो जाता है. लेकिन इफ यू नोटिस इसकी एवरेज कॉस्ट तो खास बहुत ज्यादा नीचे गिर नहीं सकती. देयर इज नॉट मच केपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट. तो ये हो सकता है तुम्हारा, लेट्स से जैसे मैंने कहा, तो टेक्सटाइल कंपनी हो सकती है. टेक्सटाइल कंपनी अगर मार्केट का 10% भी कैप्चर कर ले तो बेस्ड ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर दैट इट हैज, 10% के ऊपर वो मार्केट को कैप्चर कर लेगी. दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ दैट. तो ये तुम्हारा मिनिमम एफिशिएंट स्केल का एक एंगल होता है. It's basically to do with how much market percentage you need to capture. The bigger the business, the more fixed capital you have, the greater the market you'll have to capture. For example, for a business like Karachi Electric supplying bijli to the entire city, तो उसका मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है वो हो सकता है कि ऑलमोस्ट लाइक 80-90% के ऊपर, इफ नॉट 100 के ऊपर जाके मिनिमाइज होगा, इफ दैट वुड बी द केस. ठीक है, तो वो मिनिमम एफिशिएंट स्केल का कॉन्सेप्ट है. एंड आफ्टर दैट यू हैव what do we call this, external internal economies of scale, diseconomies of scale. Economies of scale is when you increase output your average cost falls down. दोनों डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको आना चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल, और उनकी बहुत अच्छे से कम भी जो है ना, 3 तो बहुत अच्छे से तुमको आने चाहिए फैक्टर्स. ठीक है, इकोनॉमीज के एक तरफ एक्सटर्नल है, एक तरफ इंटरनल है. इंटरनल बिजनेस डिसीजंस की वजह से जब तुम क्वांटिटी इंक्रीज करते हो, सॉरी दैट्स एल आर ए सी, जब आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हो, और फिर यू कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग यू सी दिस इकोनॉमीज ऑल्सो, राइट. ये तुम्हारा इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जिसमें बल्क परचेजिंग, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल, रिस्क बेयरिंग सब आ जाते हैं बिजनेस की स्मार्टनेस की वजह से ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कटिंग डाउन. External के अंदर business has nothing to do with it. It's an outside factor which not only benefits you but others also. So if you have an external economies of scale, let's say ये तुम्हारा LRAC है. Let's suppose we're at LRAC 0 right now. If the curve shifts downwards, average cost per unit is falling at every level of output. इस quantity पे भी it has fallen down, इतनी quantity पे भी fallen down, इतनी quantity पे भी it has fallen down. ये होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ओके, यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाज मूवमेंट, इधर होती है शिफ्ट. इफ इट गोज अप दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है. तो यू शुड बी एबल टू मेक दीज कनेक्शंस इंटरनल एक्सटर्नल के साथ. एंड दिस इज हाउ यू गो अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. काफी लेंथी चैप्टर है. Just went over it. I think tomorrow I'll have to do the essays for it because our revenue profit भी we were not able to deal with. कल 2 मिनट लगेंगे, उसको भी कर लेंगे. But then we'll move on to essays for this particular topic. I think you've pretty much covered everything that this has to talk about. थोड़ा सा I think इसके साथ we should talk about the small firms and all of that also. Um, let's deal with that tomorrow only. ठीक है.
I'm going to stop here for the day. If you have any questions, please make sure that you message.